Friends, welcome to ixamBee. We are in session 2 for general awareness for SEBI. है ना? Last week we had part 1 where we discussed the MCQs, है ना? which are very important for general awareness. अभी recently क्या development हुआ है? Recently there is development of IBPS PO boards, है ना? आपका SEBI का एग्जाम जो है वो भी IBPS ही कंडक्ट करेगा. तो अभी ट्रेंड ऐसा है कि अब आईबीपीएस बहुत ही वेग सवाल पूछ रहा है ना, वेग सवाल पूछ रहा है और बहुत ही पुराने सवाल भी पूछ रहा है. जैसे दे आस्क्ड अबाउट द पीजे नायक कमिटी, है ना. सो उसी बेसिस पे वी हैव ब्रॉट यू दी एमसीक्यूज और हाउ टू कवर ऐसी छोटी मोटी चीजें, है ना, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्माइल. Smile is the scheme launched by Ministry of Social Justice, है ना. So this becomes important, and this scheme is for the upliftment of each of the following category, है ना. किस community का upliftment इससे होगा? So you need to know the answer for this question. This scheme was in news in January. So the correct answer is beggars, है ना. Those who are involved in begging for the upliftment of those people, for their education, for their rehabilitation, है ना, for their livelihood. So this scheme is being implemented in certain cities. I think it is implemented in 7 cities as of now as a pilot project. ठीक है. 10 cities में implement होना था, लेकिन as of now 7 cities में implement हो रहा है as a pilot project. ठीक है. And Delhi is one of them. मुंबई चेन्नई उसमें नहीं है, Delhi is one of them. So this scheme you need to remember, the long form of SMILE is support for marginalized individuals for livelihood and enterprise. ठीक है. So this acronym you should remember. ठीक है. Because IBPS में acronym भी पूछे जाते हैं, IBPS में days भी पूछेंगे और आपको थोड़ा confuse करने की कोशिश आजकल चल रही है. ठीक है. Then identify the committee to set up for assessment of income limit for EWS reservation. Now we all know that economically weaker section is the new category of reservation, है ना. So there is certain kind of income limit for EWS and that is as of now 8 lakh. So one committee was set up under Mr. Ajay Bhushan Pandey. The answer for this question is Ajay Bhushan Pandey. So under Ajay Bhushan Pandey, he is ex-finance secretary. So he was, this committee was supposed to evaluate and assess this income limit. इसको कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो इनका काम था, मिस्टर अजय भूषण पांडे. ठीक है. अभी रेस्ट ऑफ द कमिटी, उषा थोरात कमिटी, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कमिटी थी इनकी. सेबी ने म्यूचुअल फंड पे भी एक कमिटी बिठाई थी अंडर मिस उषा थोरात. शी इज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. देन यूके सिन्हा, ये आरबीआई ने एक कमिटी बिठाई थी फॉर दी एमएसएमईज, है ना, फॉर एमएसएमईज. देन अभय करंदीकर कमिटी इज सेटअप बाय सेबी फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के का हेल्प करके टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ सेबी. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अभय करंदीकर इज द प्रोफेसर फ्रॉम IIT कानपुर. ठीक है. देन मधावी पूरी बुक, शी इज दी हेड ऑफ कमिटी ऑफ अलर्ट्स, है ना. अलर्ट्स करके एक कमिटी बिठाई है, उसके चेयरमैन है मधावी पूरी बुक. ठीक है. तो let me tell you that this SEBI has constituted one committee known as alerts. That is nothing but advisory committee for leveraging regulatory and technology solution. ठीक है. So this committee is for appropriate technology solution for early detection of market anomalies. Very important. SEBI से related है. Now let me tell you guys, our sale is going on. We are offering flat 41% off on all our online courses. We are offering plethora of courses. Now recently SEBI has given its notification, है ना. आरबीआई का ड्यू है और नाबार्ड के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं. नाबार्ड का भी नोटिफिकेशन आएगा जून के बाद भी, है ना.
So if you want to prepare for in an organized way for your exam conducted by SEBI, RBI and NABARD, so you can enroll in these courses with 41% off. Okay guys, now we will discuss the next question. In Jan 2022, RBI has decided to set up new department for fintech. Okay guys, I request you to join this channel if you think that the content which is delivered here is very much up to the mark, then you please join the then you please subscribe the channel so that whenever the new video comes then you will get notified. Okay, so in Jan 2022 आरबीआई ने फिनटेक करके एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया. इसके एचओडी कौन होंगे? इसके एचओडी होंगे आपके अजय कुमार चौधरी. ठीक है, अजय कुमार चौधरी इज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना, and he will head this fintech department. So the answer for this question is Mr. Ajay Kumar Chaudhary. Then Mr. S. Somnath is the new chairman of ISRO. He will be the 16th chairman. Very important. He will be the 16th chairman of ISRO. Vivek Johri, chairman of CBIC. Then MD Patra is your RBI deputy governor. RBI deputy governor and the member of Monetary Policy Committee. A.K. Goyal is the new MD and CEO of PNB Bank, Punjab National Bank. Okay. Moving towards next, this question is related to Abacus 2.0. RBL Bank is aiming at improving customer experience through digital platform called Abacus 2.0 in collaboration with which of the following organization? है ना? So answer for this question is Google. One more important information about the RBL Bank. Now it is going to be headed by Rajiv Ahuja. है ना? Earlier it was headed by Vishwaveer Ahuja. ठीक है? So this information is very important. Increasing factor of production is which type of inflation? है ना? Factor of production मतलब क्या? आपके इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो वो किस टाइप का इन्फ्लेशन होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग लेट्स से कार, है ना, नाउ कार इज टेकिंग मेनी कंपोनेंट्स. देयर इज स्टील, देयर इज पेंट, है ना, देयर आर वेरियस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, देयर आर व्हील्स, है ना, टायर है. तो ये क्या है? ये सारे इनपुट है. तो अगर इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया तो आपके फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जिसको हम बोलेंगे भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर है, लैंड है, कैपिटल है ना, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इनहेरेंटली इसका मतलब बेसिकली इसका अगर कॉस्ट अगर बढ़ जाता है देन देयर विल बी इन्फ्लेशन. तो दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, है ना. दूसरा होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल मतलब क्या? सपोज लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो गए एंड देयर आर लोन्स अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, so people will have more money, that means more demand also. So this kind of inflation will be called as demand pull inflation. ठीक है? So you need to understand both the concepts. One is cost push, second is demand pull inflation. ठीक है? Then SLDE was in news in Jan 2022. You need to identify what is this SLDE. SLDE is nothing but your secured logistic document exchange. Please remember that whenever certain goods are being transported, they need to be transported with certain kind of documents. ठीक है? आपका NC होगा, कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज है, कुछ उसके इनवॉइसेस है ना. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आते हैं. अगर इंपोर्ट हो रहा है तो और भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है. So that's why in order to bring ease of doing business, in order to bring ease in logistic, in order to reduce the logistic time, this blockchain enabled platform has been launched and it is known as secured logistic document exchange. Please remember this. Then how many small finance banks are included in second schedule of RBI? ठीक है? The answer for this question is
11. Now, if I ask you how many small finance banks are there in our country, so the answer for that question will be 12. There are 12 small finance banks in our country, but as of now only 11 are included in the second schedule of RBI, and the latest one, which is known as Centrum, Centrum भारत पे है ना, भारत पे के साथ मिलकर उन्होंने ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाई है. सो दिस बैंक इज द 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट एज ऑफ नाउ. आरबीआई की साइड पे ये अपडेट नहीं है. देन 16th इंडिया डिजिटल समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. The answer for this is Internet and Mobile Association of India. So one more important information here is the theme of this summit. Theme of this summit is supercharging startups. Okay, supercharging startups, and this was this was inaugurated by Piyush Goyal, Commerce Minister. Okay. One more acronym is given by Piyush Goyal here, that is LEAP. LEAP is nothing but leverage, leverage, encourage, access and promote. ठीक है, L is for leverage, encourage, access and promote. You need to remember this. This is related with startup. Startup is gaining importance day by day, है ना. अभी यूनिकॉर्न के पर्सपेक्टिव में इंडिया कितने नंबर पे है? 3rd. ठीक है, इट्स बिहाइंड यूएस एंड चाइना. ठीक है, तो टोटल यूनिकॉर्न में इंडिया 3rd रैंक है. Which company recently collaborated with SBI cards for card tokenization to protect cardholders' data in local international transactions? ठीक है. Now first of all you need to know what is tokenization. Tokenization will be a token which will replace your card details. What are your card details? Your card number, your name on it, your expiry, your CVV. You need to put this detail and you will get one token. That will be your temporary number. And using this token, you can transact on e-commerce website, and you can transact for various kind of for buying various kind of goods. So this will save your this will not save your financial data on that particular site. जैसे फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे पहले ये डाटा सेव होता था, अब वो नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज टू रिड्यूस द फाइनेंशियल फ्रॉड्स. ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी इससे कम होगा. ठीक है, नाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पेटीएम. नाउ वन मोर important information here is card tokenization deadline has been increased by 6 months. And the new deadline will be your 30th June 2022. Okay. Then Paytm is your scheduled payment bank. Scheduled payment bank. There are only 4 scheduled payment banks. One is your IPPB. Second is your Fino. Third is your I think Paytm, and fourth is your Airtel payment banks. Okay, so these are the scheduled commercial banks, and these can leverage the facilities of MSF, है ना, reverse repo. All these facilities can be leveraged by scheduled payment banks. With respect to the 24th financial stability report, है ना, 24th financial stability report is released by your Reserve Bank of India. ये बाइनियल रिपोर्ट है ना, साल में 2 बार आता है. एक जनवरी में, एक सितंबर में आएगा और दूसरा जनवरी में आएगा. ठीक है, सो दिस इज द 24th एडिशन. एंड हु मेक दिस रिपोर्ट? इट इज मेड बाय सब कमिटी ऑफ FSBC. ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर. ठीक है, so you need to identify this financial stability report has projected that the gross NPA, which was 6.9% in September 2021, it will increase to
8.1% by September 2022. So you need to remember both the figures. 8.1, 6.9, then 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, then ये बाइनल रिपोर्ट है, और ये इससे बना कौन बना था इसको, सब कमिटी ऑफ एसएलजी, ठीक है. Then in Jan 2022, RBI granted how much financial assistance to Sri Lanka to manage their forex crisis. Okay, the answer for this question is $900 million. Now this $900 million is given in two parts. Okay, first is of $500 million, second is $400 million. Now this $400 million is in terms of forex reserve. Okay, forex reserve, and $500 million in terms of deferment of payment of Asian Clearing Union and Settlement. Asian Clearing Union and Settlement. Okay, so you need to remember this thing because IBPS has become notorious these days, है ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. So that's why जो भी important न्यूज है उसके आपको सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए. तो ये दो कंपोनेंट भी आपको पता रखने हैं. ठीक है. Then which of the following can be classified as easy money policy? Now what is easy money policy? Easy money policy is adopted by RBI when they want to increase the money supply in the market, है ना. मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो पॉलिसी रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो नहीं होगा. पॉलिसी रेट अगर इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई कम होता है. ठीक है. सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगेन नो, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे तो पैसा पूरा सक कर लेगी आरबीआई, है ना. मार्केट में जो पैसा है उसका क्वांटिटी वो बढ़ेगा. सजेस्टिंग टू रिड्यूस कैपेक्स, अगेन नो. The correct answer is your decreasing reverse repo rate. Decreasing reverse repo means what? RBI is discouraging banks to keep their money with RBI. ठीक है. They are asking RBI, they are encouraging banks to lend to the people, MSMEs, है ना. तो इनको lend करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा. दिस विल इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना. दिस विल इंश्योर एडिक्वेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड इट विल ट्रिगर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. तो ये ध्यान में रहे, इजी मनी पॉलिसी इज रिलेटेड विद योर डिक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट एंड इट इज रिलेटेड विद योर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है. देन नेम द बैंक दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड that has recently launched green fixed deposit, है ना. ये green fixed deposit क्या है? To support the United Nations Sustainable Development Goals. Since this is related with your environment, है ना, this becomes very important. इसका आंसर है IndusInd Bank. ठीक है. The next question is, the government of Karnataka has recently partnered with NPCI and which of the following bank to implement the e-rupee? Now the correct answer for this question is your State Bank of India. Some more things which you need to remember here. E-rupee is purpose based, है ना. purpose based और person based पेमेंट सिस्टम है. जिस पर्पज के लिए, जैसे ये स्कॉलरशिप के लिए इशू कर रहे हैं तो इसको हम हेल्थ के लिए इशू नहीं कर सकते. That's why it is called हेल्थ के लिए इसका पैसा यूज नहीं कर सकते. So that's why this is known as purpose based. And a person under in whose name this e-rupee has been launched, only that person can use that. No other person can use that. So this also helps in reducing the leakage of money. ठीक है. So one more thing which is very important, that CBDC is also in news, Central Bank Digital Currency. So don't misinterpret this e-rupee as CBDC. ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है. ये डिजिटल करेंसी भी नहीं है. ये क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है. ठीक है. क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है. ठीक है.
You need to remember this, all these points, and the answer for this question is LPR. Next question is, which of the following entity has got approval from SEBI to set up accreditation agency for 3-year term? 3-year term के लिए किसको लाइसेंस मिला है? लाइसेंस मिला है CDSL. CDSL and NSDL both are repositories. ठीक है, तो CDSL को लाइसेंस मिला है and that will be valid till 1st Feb 2025. Very important. Then 19th meeting of NTCA. NTCA is National Tiger Conservation Authority. It is headed by Environment Minister. Okay, very important. Then NTCA is targeting to relocate how many cheetahs in next 5 years? NTCA is targeting to relocate 50 cheetahs in next 5 years. Okay, so the 50 cheetahs will be relocated to various national parks in India, and certain national parks are in use where these cheetahs will be relocated. One is your Nauradehi is MP. Then second is your Punopalpur, यहाँ पे करेंगे. तो ये क्या है? ये सेंट्रल इंडिया में है, MP में. सेंट्रल इंडिया कम्स अंडर ग्रासलैंड, है ना. चीता विल रिक्वायर अ ग्रासलैंड टू सर्वाइव बिकॉज ये बहुत फास्टेस्ट एनिमल है, एंड इसको अगर इफ यू रिलोकेट टू दी डेंस फॉरेस्ट तो ये भाग नहीं पाएगा. अगर ये भाग नहीं पाएगा तो ये शिकार कैसे करेगा? शिकार नहीं करेगा तो ये फिर से इंडिया में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना. ये लॉजिक है. चीता इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट इज अवेलेबल इन अफ्रीका. अफ्रीका से इसको लाके इंडियन फॉरेस्ट में रखेगा. ठीक है, to improve the biodiversity. Remember this 50 and next 5 years. Then NTCA is also important. All these things you need to remember. Then National Youth Day is celebrated on the birth anniversary of which of the following personality? National Youth Day मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे, है ना. National Youth Day होता है आपका 12 Jan को. Then अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे. दिस इज ऑन 25th of December. ठीक है. पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये होता है आपका चिल्ड्रंस डे. ठीक है, दिस इज ऑन 14th of November. देन सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस या दिन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, so this is on your 23rd of Jan. Very important. Then Sarvapalli Radhakrishnan, this is your Teachers Day. He was the first Education Minister of India. Teachers Day. This is celebrated on 5th of September. Okay, so all the days are important. Please remember this. Then recently in Jan 2022, which of the following conglomerate has announced to sell its bonds to raise 3 to 5 billion fund from offshore investors? ठीक है, 3 to 5 बिलियन रेज होने वाले हैं. अब ये पैसा कौन रेज कर रहा है? ये रेज कर रहा है रिलायंस. ठीक है, ये पैसा कौन कर रहा है? रेज रिलायंस. सो दिस विल बी यूज्ड फॉर डेट फंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, remember this. Then the next question is about which of the following states have bagged top 3 positions at the National Water Awards given by Ministry of Jal Shakti. Okay. Recently Ministry of Jal Shakti ने national award लिए हैं. This was for 2021. ठीक है, तो कौन से 3 states हैं जिन्होंने first 3 positions बैग किए? Correct answer for this is your B. ठीक है, यूपी फर्स्ट है, राजस्थान सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड. ठीक है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत. ठीक है, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प यू इन SEBI GA. So if you have liked the session, I request you to please like the session and subscribe the channel so that
you will get notified whenever new video comes. ठीक है, तो यहाँ पे सेबी जीए का पार्ट 2 खत्म होता है and we will be coming with the third part in next week. Okay, till then, all the best.